हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया वीडियो, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। टुडे वी विल डिस्कस द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट दीस डेज। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी शैल डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड्स। वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज इन द एंड आई विल शेयर अ टिप। काफी लोगों को पता होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन शॉर्ट। हम सब जानते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके वन कैन अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट, बट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स थ्रू सम व्हाट्सएप टिप और फ्रॉम some news from channels is absolutely not the right way to enter shares. इसके लिए आपकी नॉलेज थरो होनी बहुत जरूरी है। Besides, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड मनी। 2-4-5 हजार में आप शायद 2-4 अच्छे शेयर्स भी नहीं खरीद पाएंगे और आपको प्रॉफिट नजर भी नहीं आएगा। सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स नीड्स नॉलेज, टाइम एंड फंड्स। हमारे जैसे ऐसे हजारों इन्वेस्टर्स होंगे who lack knowledge or who lack lot of funds too. If thousands of people come together, let us say for example, if 1,000 people come together and collect rupees 5,000 each, they can collect 50 lakhs. And एक expert 50 लाख से definitely अच्छे stocks खरीद सकता है, and then profits can be divided among these investors. That is how this mutual fund houses work. They collect small amounts from thousands of investors and then invest in good companies. So basically, small investors get access to professionally managed portfolios. So is mutual fund 100% safe? No, it's not. But it's not as risky as investment in direct stocks without knowledge, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा एक professional fund manager, few analysts and a compliance manager manage करता है, and that expertise minimizes the risk of capital loss. Today let's understand, are SIPs different than mutual funds? No, they are not. When you invest in a particular scheme, a lump sum amount, तो हम उसे mutual fund कहते हैं। हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, और अगर वही सेम स्कीम में आप एवरी मंथ सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो वी कॉल इट SIP, systematic investment plan. Mutual fund schemes are normally a part of much larger investment company like ICICI Prudential, SBI, HDFC, Franklin Templeton, Nippon India, Kotak, DSP, etc. These companies have many different schemes representing the kinds of securities they have targeted. बहुत ही simple language में अगर बताया जाए तो equity funds invest purely in stocks, and therefore they are high risk funds. Balanced funds invest in stocks, but they also invest in government bonds or alternative instruments, so the portfolio is balanced. Balanced funds को asset allocation funds भी कहा जाता है. The allocation may keep changing based on market risk. They may give moderate returns but are with comparatively low risk. Tax saving या ELSS, equity linked saving scheme, offer tax benefits and have 3-year lock-in period for a lump sum amount and approximately 6-year lock-in period when you do a SIP in ELSS. Liquid funds invest in short-term debt instruments to give a reasonable return to investors over a very short period of time. It's another alternative to the money which is kept in savings bank account. Debt mutual funds, majority they invest in debt instruments like government bonds, debentures, etc. They have very low risk and is just an alternative to a fixed deposit. Hybrid funds are similar to balanced fund, सिर्फ इसमें investment in equity is comparatively lesser, इससे उसमें risk भी कम हो जाता है. Sectoral funds invest in specific sector. For example, SBI, Axis, Kotak blue chip funds, they invest only in blue chip companies like Infosys, TCS, HUL, ITC, etc. Or L&T infrastructure fund, which invests only in infrastructure companies. Or DSP healthcare fund, which is investing only in leading healthcare companies. Then we have thematic funds, जो particular theme या trending industries में invest करते हैं. For example, Digital India Fund is investing in IT enabled companies as it is working on government initiative like Digital India and Startup India. Fund of Fund, FOF, invests in portfolios of other funds and not directly in stocks.
A flexi cap fund is not restricted to investing in companies with market capitalization. So fund के नाम से ही आइडियली आपको पता चल जाना चाहिए कि किन कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है. Mutual funds in itself is a topic that needs to be revisited and understood well, because लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट हाइक या बिकॉज दे बिलीव कि म्यूचुअल फंड्स कैन गिव देम हाई रिटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट टर्म. बहुत कम इन्वेस्टर्स कंप्लीट नॉलेज के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं. रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स डू नॉट कम विद द वर्ड गारंटी. दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. लो रिस्क या हाई रिस्क, बट थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है. बट यस, रातों रात कोई स्कीम वैनिश नहीं होगी. थैंक्स टू सेबी एंड एम्फी, नो फंड हाउस कैन रन अवे विद इन्वेस्टर्स मनी. Mutual funds do not guarantee capital protection or fixed returns, but they have potential to earn higher returns than traditional investments. But remember, there are only 75% chances that a mutual fund can give you more than 15% returns. That too if you keep invested, if you remain invested for almost 15 years. Next video, we will cover some more important topics like NFOs, ETFs and much more. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on any information on mutual funds. ये entire mutual fund series से आप expert तो नहीं बनेंगे, but yes, you can at least understand your own current portfolio. As promised, tip for today is to generate long-term capital appreciation from your portfolio. You can consider investment in ICICI Prudential Technology Fund, Aditya Birla Sun Life Digital India Fund or Tata Digital India Fund. They all are sectoral funds and expected to go really good considering the objective of the scheme. However, they are high risk funds. अपने कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस करें. ड्रॉप अस एन ईमेल फॉर एनी अदर एडवाइस. हमसे जुड़े रहें एंड यस, प्लीज टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो. Stay connected with us for the mutual fund series.